Assalamu alaikum. मैं Dr. James Johnson. My dear viewers, have you seen Ukrainian forces led by Zelensky have launched massive scale operation against Russia deep into the Russian border, almost 4,000 kilometers away from the Ukrainian border, and they have hit hard at the Belaya air base, causing damage to 41 aircrafts, amounting to loss almost 7 billion US dollar with very low cost drones called first person view. ये first time strategically this is a paradigm shift. The Western analysts and even the Eastern analysts in modern warfare, they are believing that Ukrainian forces have changed the table. Basically, they have turned the tables for negotiation in Istanbul. ये वेरी यूनिक टर्न उसमें आया है कि एक दिन पहले Russian negotiators in Istanbul, they were dominating the tables. But right now, इन मॉडर्न वारफेयर को अडॉप्ट करते हुए जेलेंस्की जो कह रहा है कि हमने कोई 1 year and 6 month 9 days का ये ऑपरेशन बिफोर दैट इसको प्लान किया था और हमने इसको एग्जीक्यूट किया है. बेसिकली यूक्रेनियन फोर्सेस आर क्लेमिंग दैट दे हैव हिट 5 एयर बेसिस, बट जो लास्ट है वो 4,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द यूक्रेनियन बॉर्डर है. So according to the Western analysts, Russia has suffered a major damage, and this has turned the tables in Istanbul for negotiations, and by causing low profile negotiator on the table. And before 1 or 2 days, Russians were dominating the table and they were not agreeing to the conciliation and to ceasefire. But right now, Ukrainian forces and Ukraine has dominated the table. ये क्यों हुआ है? स्टबन एटीट्यूड दिखाया गया रशियन फोर्सेस की जानिब से, और बार बार वेस्टर्न वर्ल्ड उसको कह रही है, इवन मुस्लिम वर्ल्ड उसको कह रही है कि देखें मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरह ये गाज़ा की सूरत में इसराइल ब्रूटैलिटीज़ और एग्रेशन चल रहा है और ह्यूमैनिटी इज सफरिंग टू अ ग्रेटर लॉस. Tens of thousands people have been killed in Netanyahu wars by using the shoulder of Western, basically American establishment and American corporations, to protect the ideology, aggressive ideology of Netanyahu and Israel. USA shoulder is being used to safeguard the undue favors and undue benefits of Israel. तो इस पे मुस्लिम कंट्रीज भी कह रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन, इवन कनाडा तक उसको कह रहा है रशिया को कि भाई आप कर्टेल करें और इस वॉर को जो है यूक्रेन के अंदर इसको बंद करें, otherwise this can turn into a World War III. Even Donald Trump, USA president, he is insisting again and again, he is advising, he is even using his friendly relations with Vladimir Putin, Russian president, but Russian president is not agreeing with the demands and you can say terms of negotiation with अमेरिकन प्रेसिडेंट. जेलेंस्की उस पर इंसिस्ट कर रहा है. ये बड़ा यूनिक है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, वो रिजिलियंस शो कर रहा है और उसकी जो बात में वो दम नजर आ रहा है. इससे पहले ऐसा समझा जा रहा था कि रशिया विल डिस्ट्रॉय इंटायर यूक्रेन विद इन अ फ्यू डेज, बट 2 and 3 years हैव पास्ड, बट यूक्रेन का एक स्पेसिफिक टेरिटोरियल जो जुरिस्डिक्शन है रशिया उस पर कंट्रोल कर पाया है. किसी अभी रिसेंट अटैक के अंदर उसने रिटेलिएशन में जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है उसको हिट हार्ड अंदाज में उसको किया है. बाकी क्रीवी एक सिटी है जो ऑलरेडी टारगेट में था, उसका एस्केलेशन बढ़ गई है, बट द इंटायर वर्ल्ड इज डिमांडिंग पीस. दैट इज द मेन पॉइंट. और कहा जा रहा है कि आप किसी के घर को हिट करेंगे तो वो जवाब देगा. यूक्रेनियन फोर्सेस ने बड़ा जबरदस्त अंदाज में, यानी मैं कहूँगा कि दे हैव गिवन अ डिसाइसिव रिस्पॉन्स टू रशियन अग्रेशन. और बेहतर भी यही है कि रशियन प्रेसिडेंट को सोचना चाहिए कि इट्स ओके, योर केजीबी की प्रेडिसेसर जो है एफएसबी, उसको हिट किया गया, उसके गेट के बिल्कुल करीब जाके, यानी मेन गेट के करीब उसको मिसाइल मारा यूक्रेन ने. अकॉर्डिंगली वो भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम था
رشیا کا وہ ہٹ ہوا ہے، وہ ڈیمیج ہوا ہے. اگر 7 بلین نہ کریں، 2 بلین، 3 بلین، 4 بلین لاس ہوا ہے، اور اس کی جو اسٹریٹجک وارفیئر کیپیبلٹی تھی وہ ڈیمیج ہوئی ہے. تو دنیا بھی کہہ رہی ہے، میری بھی خواہش ہے، میری طرح ہزاروں کروڑوں جو ویلوگر ہیں ان کی بھی خواہش ہے کہ دنیا میں پیس اسٹیبلش ہونا چاہیے. یوکرین رشیا وار جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، دونوں طرف سے امن اس کی جو پرچار کیا جانا چاہیے، امن کی فضا اسٹیبلش ہونی چاہیے. فار دا لاسٹ اوور 3 ایئر یوکرین کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے، یوکرین میں انسانیت سسک رہی ہے، جسٹ لائک ان غزہ. آپ دیکھیں جہاں پہ 20 lakhs پیپل کو ڈسپلیس کیا گیا، جس میں اوور 70,000 پیپل انکلوڈنگ چلڈرن اور ویمن ہیو بین کلڈ بائی دا بروٹیلٹیز آف نیتنیاہو اینڈ ہز illegally occupied forces. تو ڈیمانڈ ہے میری کہ مسلم ورلڈ جو ہے اس میں اسٹیپ فارورڈ کرے، اور اس میں جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ نیگوسیشن جو ٹیبلز ہیں اس کو انہینس کریں. ولادیمیر پوٹن کو جو ہے ریکنسیلیشن ٹیبل پہ لایا جائے، نیگوسیشن ٹیبل پہ لایا جائے. طیب اردگان کین پلے اے میجر رول اس میں. پرنس محمد بن سلمان، دا کراؤن پرنس میں محمد بن سلمان جو ورچولی وزیر اعظم سعودی عرب بھی ہیں، وہ اس میں ایک کلیدی رول پلے کر سکتے ہیں. بیسیکلی دے آر ڈیزائرنگ کہ یوکرین رشیا وار ختم ہونی چاہیے.